Starting with the question 10, Mr. Prabhakar. Okay, to mention that this question has come in Maharashtra Board March 2012. A nice question will clear your concepts, so pay attention. Mr. Prabhakar is a retail trader. He has no proper method of accounting. First line only shows that it is a single entry ka question because no proper method of accounting is followed, but following information is made available to you. 2 years 1/4/2009 and 31/3/2010. So 9-10 का opening closing दिया हुआ है. Sundry debtors, sundry creditors, बैंक overdraft, क्रेडिट है लाइबिलिटी साइड में आएगा, स्टॉक, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, मोटर वैन, कंप्यूटर. 10% government bonds were not there means they must have been purchased in during the year because opening में नहीं है, डैश है, 10% परचेज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर. एडजस्टमेंट, लेट्स रीड द एडजस्टमेंट और हमारा एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग वाला एडजस्टमेंट पकड़ लेते हैं क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में दिखेगा. सबसे पहले कैपिटल नहीं दिया हुआ है इसलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा टू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल. आफ्टर दैट लेट्स रीड द एडजस्टमेंट्स. On October 1st, 2009, Mr. Prabhakar had withdrawn 40,000 for his personal use. क्या है ये 40,000 जो पर्सनल यूज के लिए निकाला है? ये ड्राइंग है. सो जस्ट मार्क इट इज ड्राइंग. डी से मार्क कर दो, ड्राइंग है. 10% government bonds of rupees 10,000 were purchased on 1st October 2009. जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ये परचेज करने का आपको डेट दिया है इन्होंने 1st October 2009. सो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिखते ही आंख खुलना चाहिए कि इसका इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एट द रेट 10%. 10,000 का 10% इंटरेस्ट होगा. बट सी ईयर डेट 1st October. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स गया तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा जिसका हम एडजस्टमेंट करेंगे. सो मार्क दिस इज फॉर योर एडजस्टमेंट. He withdrew rupees 30,000 for his daughter's marriage. Again 30,000 for daughter's marriage is your drawing. So 2D drawing दोनों को मार्क करो. Depreciate furniture by 10% and write off 2,000 from motor van. Depreciate जो कुछ भी करना है that is again additional, वो अभी नहीं बाद में. Rupees 2,000 is written off as bad debts. 2,000 is written off as bad debts and provide 5% reserve for doubtful debts on your debtors. So on debtors होगा ये reserve for doubtful debts. This is also your adjustment. Allow interest on capital at the rate 10%. Again adjustment. Charge interest on drawings. Interest on capital, interest on drawing is an adjustment. So where is the further capital? I could not see any further capital तो वो इस क्वेश्चन में नहीं है. So prepare the following after taking into consideration the adjustments. Opening statement of affairs, closing statement of affairs, statement showing profit or loss for the year ended 31/3/2010. So let's start with the solution. Statement of affairs 1/4/2009 starting 2010 is your ending. And सबसे पहले come on sundry debtors. So debtors in your assert side, debtors कितना दिया है 45,000 and 50,000. सी debtors से रिलेटेड बहुत सारा एडजस्टमेंट्स दिया है रिजर्व बनाने का, बैड डेट्स प्रोवाइड करने का. ओवर हियर सी 2,000 इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोवाइड 5%. ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है और एडजस्टमेंट में हम ये काम करेंगे. यहाँ पर 50,000 के बैलेंस शीट अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वी विल डू नथिंग, विल कॉपी द अमाउंट एज इट इज. नेक्स्ट इज योर सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आते ही अपने आप लाइबिलिटी साइड कितना है क्रेडिटर्स 60,000 and 70,000.
60,000 and 70,000 is your creditors. तो debtors लिख दिया, creditors लिख दिया. Bank overdraft again your liability. 80,000 and 40,000. 80,000 and 40,000 credit balance, bank overdraft. Stock 65,000 and 80,000. Stock 65,000 and 80,000 is your stock. Next, cash in hand 2,000 and 8,000. Cash in hand, you might assert, current assert 2,000, 8,000. Okay, next, bills receivable. Bills receivable is again my assert, current assert 60,000, 80,000. Okay, furniture 10,000 and 10,000. Furniture, fixed assets is 10,000 and 10,000. See, it is written in other points depreciate furniture by 10%. बट यहाँ कुछ नहीं करना है क्लोजिंग में, वो सब एडजस्टमेंट में ही होगा. ओके, रिमेंबर दिस, डोंट स्टार्ट subtracting depreciation from closing furniture balance here, you will go wrong. So furniture is done. Motor van 80,000, 80,000. So write motor van. $80,000 and again 80,000. Okay. Computer, okay, 60,000 and 1,20,000. कुछ कंप्यूटर खरीदा होगा. 60,000 and 1,20,000. Now 10% government bonds. इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन याद रखना है. जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट लगाएंगे उसके बाद उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओपनिंग में था ही नहीं एंड 10,000 का खरीदा है. ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट डन. टेक आउट द टोटल. 45,000, 65, then 2, then 60, then 10,000, then 80,000, then 60,000. What is the total? The total comes up to 3,22,000. So here also it will be 3,22,000 and your balancing figure will be the capital. 3,22,000 minus 80,000 minus 60,000 comes up to 182,000. 1,82,000 is your opening capital. Now total of 50,000, 80,000, 8,000, again 80,000, 10,000, 80,000, 1,20,000 and 10,000 comes to 4,38,000. 438. Subtract 40,000 and 70,000 from it and it comes to 3,28,000. So capital opening and closing मिल गया है. तुरंत capital account बनाओ. 5 things you have to put in capital account. Opening capital से start करो. By balance brought down, opening capital is 182. So 182
1,82,000. Immediately closing capital आ जाना चाहिए. So to balance carried down is 3,28,000. 3,28,000. Now what? In your debit side, the third item will be your drawing, because that reduces your opening capital. So two drawings. We have marked two drawings here. First is here, withdrawn 40,000 for personal use. So 40,000 is for your personal use. And then the second drawing, this is done, so mark it, and this is also done. So second drawing is he withdrew rupees 30,000 for his daughter's marriage. So 30,000 is again drawings. Total drawings 40 plus 30 comes up to 70,000. And as we discussed, we did not find additional capital in the question. So by bank additional capital कुछ है ही नहीं, कुछ लाया ही नहीं है. So it will be nil. You may not write this, but since I have made a point to make 5 things in capital account, so balancing figure will be by net profit before adjustment. By net profit, that is before adjustment. ये adjustment से पहले है. So take the total. 3,28,000 plus 70,000 comes up to 3,98,000. Minus 1,82,000 will be your net profit. Okay, so 3,98,000 minus 1,82,000 is 2,16,000 is your net profit. And now let's move on to make up the statement of profit and loss account. Capital का जो figure है वो as it is हमने capital account में से उठा लीजिए. सबसे पहले we will start with the closing capital. So closing capital, write it as closing capital or capital as on 31/3/2010. कितना आया था क्लोजिंग कैपिटल? चेक द कैपिटल अकाउंट. इट इज 3,28,000. सो 328 इज योर क्लोजिंग कैपिटल. नाउ क्लोजिंग कैपिटल लिखते ही एड लेस लेस. सो एड लेस लेस. एड टेक अप दी drawings made during the year. That was 40,000 plus 30,000, that is 70,000 is your drawings. So you have to add it up, and that comes to 3,98,000. 3,98,000 is your drawings. Now let's add, पूरा का पूरा add उठा लो. यहाँ पे add से बनाओ एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल कुछ है क्या हमारे पास प्रोवाइडेड? कुछ है ही नहीं, तो उसको लेस कर दो, मतलब उसको एक साइन डाल दो. देयर इज नो एडिशनल कैपिटल. नाउ लेस ओपनिंग कैपिटल, और यू कैन राइट इट एज कैपिटल as on 1/4/2009. That comes up to, we had calculated 1,82,000. So subtracting this, we get the net profit before adjustments, that is 2,16,000. Now what is this? This is net profit before adjustment that we also saw in the capital account.
is 2,16,000. Now come up to the adjustments. The first thing, government bonds का adjustment हमको याद रखना था. 10% government bonds of 10,000 were purchased on 1st October 2009. Means there must be some interest that we have to add because interest मिला है, net profit बढ़ेगा. So add interest on government bonds. Interest on government bonds, that is 10,000 का government bond है, 10% उसके ऊपर interest है and it was purchased on 1st October, so only 6 months का interest है, पूरे साल का नहीं देना है. So interest on government bonds will come up to 500 rupees. Okay, that is 500. Now next, ड्राइंग का हो गया. नाउ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट एंड हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा, सो लेस डेप्रिसिएशन. हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%. सो फर्नीचर, लुक एट फर्नीचर फर्स्ट. फर्नीचर इन द बैलेंस शीट इज 10,000. सो 10,000 into 10% is your furniture. It should be depreciated at 1,000. 10,000 का 10% 1,000. फर्नीचर depreciate हो गया. Now 2,000 from motor van. So motor van 2,000. So total depreciation is 3,000. That you have to subtract. Coming up to the next adjustment, rupees 2,000 is written off as bad debts and provide 5% for reserve for doubtful debts on debtors. Okay, so bad debts और reserve for doubtful debts जब बनाया जाता है तो हमारा profit definitely decrease होता है. So less. One thing is, first see कि debtors कितना दिया है बैलेंस शीट में. Debtors is 50,000. So 50,000 debtors है और bad debts लिखने को बोला है 2,000. Okay, so what you have to do is, when reserve for doubtful debts बना रहे हैं तो आपका जो बैलेंस शीट में debtors है 50,000, उसमें से पहले आप हटाइए bad debts का अमाउंट 2,000, क्योंकि ये तो इस पे रिजर्व नहीं बनेगा. दिस इज ऑलरेडी बैड, तो रिमूव दिस फर्स्ट एंड टेक इट आउटर. 48,000 हो गया. 48,000 पे आप 5% रिजर्व बनाएंगे एंड दैट 48,000 पे 5% रिजर्व विल कम अप टू 2,400. सो 5% इसका लिखिए, दैट विल कम अप टू 2,400. So you have two things here. One is bad debts जो आपको लेस करना है. Bad debts debtors का जो है that is 2,000. So bad debts कम करिए 2,000 and reserve. Bad debts already हो गया है तो 50,000 पे पूरा 5% नहीं बनाना है. 50,000 पे 2,000 जो bad है, जो बचता है उस बैलेंस पे 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनेगा. दैट कम्स अप टू 2,400. तो उसको भी लेस कर दो 2,400. वन मोर थिंग इज कंप्लीटेड. नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बचा है. हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पे करना है प्रोप्राइटर को, इसलिए लेस. अगेन लेस. व्हाट डू वी लेस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है कैपिटल? सी 1,82,000 इज योर ओपनिंग कैपिटल. तो उस पर इंटरेस्ट दो. इट इज गिवन एट 10%. सो 182 into 10%, that comes up to 18,200. We will have to pay 18,200. So that is your interest on capital. And now interest on drawings. Interest on drawing is
बिजनेस का इनकम, सो इनकम है, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐड करो, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। How much interest on drawings is given? It is given that interest on drawings is 2000, so add 2000 over here. And now after doing all this adjustments, what we get here is net 23,100. We have to subtract, giving effect of all these adjustments, and then what we get is net profit during the year. It is 192900. Okay, 192900 is your net profit during the year. So we have done all variety of adjustments in this question.